एक अहम दिन। Good morning, friends. बहुत बारीकी से समझा है। 2nd of February 2022 के प्री ओपन मार्केट के डाटा सेट के साथ में मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। अनुपम शुक्ला, ई-लर्न फिनटेक की ओर से। तो आइए एक नजर डालते हैं इस समय की निफ्टी 50 इस समय 131 पॉइंट ऊपर है कल की क्लोज से, करीब 0.75%, और सेंसेक्स भी 430 पॉइंट्स ऊपर है इस समय। तो आइए एक नजर डालते हैं कि कंपोजिशन ऑफ निफ्टी किस तरीके का था कल, और हम इसे अगर अपने स्पेशल टूल से देखें तो डेफिनेटली काफी वोलेटिलिटी वाला पिछला दो हफ्ता रहा है, और जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ डिक्लाइन रहा है, और जिसमें हमने काफी सेल ऑफ भी देखा था, और डेफिनेटली इवेंट बेस्ड पूरा हमारा थीम था, रिजल्ट्स भी थे। तो ये जो हफ्ता था इसमें काफी सेल ऑफ हुआ, और यहाँ करीब इस जगह जाके बेस लेकर उठ खड़ा हुआ। सीपीआर जो है सब नैरो है, तो ये दिखाता है कि दिस वीक इज गोइंग टू बी इन ट्रेंड, और जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ये 2 दिन बाजार ऊपर रहा, और जिस तरीके से रिजेक्शन आपने देखा, लेकिन जो क्लोजिंग और ओपनिंग है ये अपर डायरेक्शन ऑफ दिस रेंज है, और आज भी जो ओपनिंग है इस तरफ है। तो हम यही की एरियाज को देखेंगे कि किस तरीके से कल के जो क्लोज और आज के जो ओपनिंग के बीच में बाजार में कुछ किस तरीके से आती है। डेफिनेटली वो कंपोजिशन पे आएगी, और आज काफी सारे रब ऑफ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली हम मेटल सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर को जरूर देखेंगे। कैपिटल गुड्स पे अच्छा परफॉर्म किया। तो यह तो था आज इंडेक्स के बारे में। आइए देखते हैं हम कि इस समय किस तरीके से बाजार ने करवट ली है। तो अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक, या हम इसे एक बार लिस्ट करते हैं ठीक से, और तो आज हम बैंकिंग सेक्टर में कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक भी देख रहे हैं कि ये ऊपर खुल रहे हैं। आईटी सेक्टर में भी हम देखते हैं कि किस तरीके का स्थिति है। तो वी विल गो फॉर आईटी, एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इन्फी में फिर से 1% के आसपास ऊपर का उछाल है। तो ये सारा जो थीम है कि हम देखें स्पेशली मेटल को भी, तो मेटल में भी आज एक स्ट्रेंथ दिख रही है। शुरू की ओपनिंग में टाटा स्टील पर एक बेट है, और ये रब ऑफ इफेक्ट्स डेफिनेटली का रिजल्ट डिक्लेरेशन के हैं। तो हम इन सारी चीजों पर आज नजर रखेंगे। एनर्जी सेक्टर के बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। तो बीपीसीएल भी काफी ऊपर खुला हुआ है 1.62। तो आइए हम सीधे चलते हैं और नजर डालते हैं कि वॉल्यूम्स किस तरीके के हैं, क्योंकि बाजार ऑलरेडी सेटल हो चुका है। अदरवाइज बाजार फिर हमें इतना टाइम नहीं देगा समझने को कि हम स्टॉक सेलेक्ट कर पाए। तो यह प्री ओपन मार्केट का डाटा है, जिसे हम फ्रेश कर लेते हैं। एडवांसेस 170 पर है इनिशियल, यानी ओपनिंग में दिख रहा है कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, और वहां से फिर हो सकता है कि लॉन्ग माइंडिंग इनमें देखने को मिले। ये सारा बिल्डअप हमें फ्यूचर डाटा से देखने को और बेटर वे में मिलेगा। तो आज हम सेल को देख रहे हैं, अशोका लेलैंड को देख रहे हैं, बीपीसीएल को देख रहे हैं। कोटक में हालांकि टाटा इंफीरियर है, क्योंकि हमारा सेट पैमाना है कि 30,000 हैज टू बी देयर वॉल्यूम, बट उसमें ये अभी फिट नहीं बैठ रहा है। देन रिलायंस आज अगर ऊपर खुला है तो कंपोजिशन में डेफिनेटली इट विल बी टेक पार्ट। टाटा स्टील इज गोइंग टू बी बैक। तो बीपीसीएल, टाटा स्टील, अशोका लेलैंड, ये तीनों पे हम पूरी नजर रखेंगे, और साथ ही हम ये देखते हैं कि आईटीसी भी मूवमेंट में हो सकता है। चार्टिकली इसके आप एनालिसिस इसका कर सकते हैं। टाटा मोटर्स भी आज दिख रहा है कि कुछ ऊपर की तैयारी में। तो आइए हम इन्हें सीधे ग्रिड पर डालेंगे। टाटा पावर भी, टाटा के सारे कंपोजिशन आज अच्छी वॉल्यूम के साथ में ओपनिंग दिए हैं। तो यह स्थिति थी जिन कंपोजिशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आइए हम एक नजर डालते हैं फिर से। आईसीआईसी बैंक भी आज बैठ रहेगा। तो टाटा के तीनों कंपोजिशन, आईसीआईसी बैंक, उसके बाद जो स्टॉक हम अभी डिस्कस किए हैं आपसे, उन सारों पर हम नजर रखेंगे। तो यह था आज का
मॉर्निंग कंपोजिशन जिसपे हम एक पैनी नजर रखेंगे। तो अशोका लेलैंड, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आइए इनको हम तुरंत देखते हैं कि इनमें इसमें स्थिति क्या है। So we are going to select strike prices and we have to do it very fast. Market is about to open. I think बहुत कम समय बचा है, तो हम देखते हैं कि बाजार किस तरफ होगा इस समय, और that is the way we have to catch market like this. तो अशोका लेलैंड, आईसीआईसीआई, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पे हम नजर रखेंगे, और बाकी मार्केट का डाटा हमें लाइव देखने को मिलेगा। चंद मिनट है बाजार खुलने में, आइए। दोस्तों, बाजार खुल चुका है और इस समय निफ्टी अपनी ओपनिंग के आसपास से थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ। आइए हम तुरंत नजर डालते हैं कि इस समय स्टॉक्स हमारे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और दोस्तों, अभी टॉप परफॉर्मर निफ्टी मीडिया है, फिर निफ्टी बैंक है, जिसमें कोटक बैंक, ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक इस समय मूव किया है, एचडीएफसी बैंक मूव किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में चोला जिसे काफी अच्छा परफॉर्म किया था, और वहां पर बजाज फाइनेंस भी इसमें दिख रहा है, श्रीराम भी दिख रहा है इसमें। तो ये डाटा सेट है, हालांकि इनमें इनिशियली ओपन मार्केट से डाटा नहीं मिला था। एफएमसीजी की बात करें, आईटीसी डेफिनेटली इज डूइंग गुड। मेरिको भी पीछे क्यों हो रहा है रेडिको के साथ में। मेटल की बात थी तो टाटा स्टील वी हैव टू कैच। टाटा स्टील कहाँ पर है, तो 0.66, तो अभी मेजर थ्रस्ट नहीं है, बट दूसरे जो स्टॉक्स हैं जिसमें स्पेशली आप देख सकते हैं कि सेल ये स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट में है, लेकिन वी हैव टू सी इट समवेयर अराउंड। एनर्जी सेक्टर, और इस समय इंडेक्स जहां खुला उसके आसपास से मूव करता हुआ है। एनर्जी में बीपीसीएल इज डेफिनेटली अ गुड कैच। वी हैव टू गो इमीडिएटली एंड टू ऑब्जर्व कि व्हाट इज देयर इन बीपीसीएल राइट नाउ, एंड वी हैव टू कैच। बाजार खुले लगभग 1 मिनट है इस समय, तो we are trying to see the data, and right now data is not very much filled over here. So 380 we can bet for 380, and 400 is a good resistance area. So we are just trying to put this on our trading software, and immediately we will see what is happening. Yeah. So this is the situation for BPCL right now, and immediately we will
go, and I hope you are observing the trade screen. So this is for the BPCL right now around 380 call option, and now we have to see the composition of index, which stocks are performing. So we will immediately go and we'll trigger many of the data points, and right now you see that it is 10 points above from the opening. So yes, HDFC Bank is participating, and with the price change, you can see 1%. HDFC is there, Kotak is there. Definitely we have to capture something from the Kotak and ICICI Bank. Yes. So right now you see unwinding is there around 1900. We are definitely going for Kotak 1900, and we can see that what is happening. So yes, it's a very good move. And along with ICICI Bank is also going to be backed. And Kotak is going very, very nicely. And you can see from here that the movement of Kotak is very impressive. The thrust in the, we can say, in the premium is very nice. And definitely we would like to see it over here and try to find out what is the strength of its movement and through especially price. So right now, the direction of indicators are into the bullish mood, and we have to see how long it is going to sustain. So this is from the future penny series data. So you can see the thrust is very strong and having resistance around R1. So hope that this can be, I think it will cross this area, and since the unwinding is there, so volume is also there. So this next candle is going to penetrate that thing, so that is going to be good. Now, time to see ICICI Bank also. This is ICICI Bank future, and you have to see thrust immediately. So as you can see, this that sell-off is here. So right now, this is not going to be in our direction. Similarly, HDFC Bank. And see, these are the ways how you can capture data, whether you can deal with the clients and you can deal like this. Same for the HDFC Bank. What is with the BPCL already, that is on our trading grid. So that is the situation of BPCL right now. And there is initial, we can say, the thrust was there, but the close was below open. So red candle is there, and now it is struggling around pivots, not a very strong move for this particular stock. Now time to move for, I hope you are looking into the concerned stream. Yeah, that is there. Okay, so time to again capture a few more stocks which are promising right now. Just see, this is market has passed only 7 minutes, and this is the fastest way, because here NR7 NR5 you are dealing with those breakouts, opening and closing, and either you are dealing with CPR, whatever is the strategy. But the way is to look into the live market, and that is going to increase your conviction towards market. So time to go for fresh future OI buildups. Maybe they are good for, okay. Ideas also there with a good volume, and Deepak Nitrites chemical is moving. Ashoka Leyland was there into the grid, and it's moving very nicely. Then few of the stock from banking sector, and yes, there are many stocks. Axis Bank, Bank of Baroda, most of the stocks are there, and India will also remember why is not that much impressive here. GMR Infra, which we have spoken earlier, also having a great build-up of OI. So time to capture few stocks from future segment, and then immediately we can see the option chain, what is happening. So I'm dealing with future data and expiry. I'm going to take this one. Fair. I need to have only 2% change here and maybe 3% change in OI. So let's see what is happening. So many stocks are here. So we go for 5% to find a good thrust.
Many stocks are here. You can see over here, Navin Flooring, very large movement into the future segment. But the stock is very, as per the number, it is 4,000 plus. So we are not going. Jindal Steel, yes, definitely we can look around. And anything else which we have spoken about. So I think Dalmia Bharat and Jindal Steel is going to be a good bet. So let's see its open interest and get any strike price. Oh, great unwinding here, around 400. So it is better to deal with now 420 Jindal Steel. So we go on our trading software, Jindal Steel 420. We have to see what kind of thrust impact is there into the premium. Since I'm making this in the live market, that's why I'm not having an opportunity to scalp right now these trades. Jindal Steel, and we are dealing with 420. So can see, so that now it is correcting, and same way we can see for 400. So these are the things which you have to capture. Sometimes the thrusts are so strong that you cannot get opportunities, and that is for the short-term trade. So these trades are already vanished, and you can see the thrust, what kind of thrust was there. So initially you will find a good thrust. So as you can see, what is happening here, and this was a great move yesterday. So it is very fair to look into the data of Jindal Steel, and that can be a good bet for, we can say, your futures. So as of now, we can see that the buildup of Y is there into the futures, long view is there. But you can see the first candle, it is red, and then it is crawling at, we can say, on the pivot. Already today's pivot is higher than this today's period. But we need to have some thrust here. So volume is also not reflecting our, we can say, moving average. So definitely this is not going to be your bet right now. Now moving forward, if you track this thing through triggers or to screen through some other data points in tool of synopsis, or we can say Finosphere, so we can see what is happening. So this was the case. And now I'm going for option, going for mall. Just trying to refresh it. Volatility I have to get rid of. So it is going to be filled with many data points. So we go like this. So let's take a chance and can have see many. So Cummins India is there into the list, ITC is there into the list, performing well, and the change in IV, so this is cooling off. So I think Cummins India is having some reflection right now, and major thrust was there at 1,000. So let's see the performance. Cummins 1,000. I'm making this video to let you know that how you can capture the movement in the live market. So yes, that is a very impressive thing. And as you have seen into the Fendo segment, the build-up of OI. So you can see initial 1, 2, 3, 4, 5. It's very strong upthrust, and I think the movement was very impressive also. So that was a good bet. Kotak is also performing well. So definitely it is crossing that R1, definitely from here we can say. And again, moving back and selecting any of the stock from here.
And you can, if anything, if the price action and with this data change and with the previous data with different time frame, you can check for the I think swing trading into the option also. So that's not an issue. And IV can be your friend, can be your enemy. So you can see over here that what is happening here right now. That can be revealed also. So what is Nifty? Yeah, slight hour. So I don't hope that you can find some sideways movement, and if profit booking is going to start, so may find some dip. And yesterday high close is going to be very important for you. So already something is here, and that is Catilla. Catilla has some news, so can be reflected over here, but I think we are having some delay. So Catilla, we can say 415. So the key is that you have to understand price first, maybe through some program or something like that. So these are the initial moment until first 5 minutes. So that is there, and which you have to respect. So that was what is happening in the morning in the market, and let's have some look on the behavior of market, how it is performing right now. And I hope you have some understanding that how market is behaving. So 166 is long, 24 short, and that's the market today. So thank you, friends, for joining, and we'll catch you if some good trades there. Thank you very much.